Yes, good morning, everyone. This is Piyush Nagda from Prabhudas Leather. We'll start in a minute. Right, so welcome everyone to another insightful session from Prabhudas Leather. This is Piyush Nagda. I head the investment products division where we deal with lots of products which can help you grow your businesses as well as it can help our clients create a lot of wealth. So we deal in a lot of investment products and help our clients with many wealth solutions which are currently available in the market. And we deal in Prabhudas Leather products as well as third-party products wherever applicable, wherever we feel that our clients basically require the products which are right now popular in the market as well as they're doing very good. So now today's topic actually which I will be covering is investing in IPO and unlisted shares. It's a major category which we cover within our vertical. And as everyone knows, and since we have gathered on this Saturday morning on 24th July, it's a historical day. Whatever happened yesterday in our markets, the listing of Zomato, the kind of blockbuster listing Zomato saw, and the euphoria which has been created for all the upcoming IPOs. I will not mince my words. I will be very open and tell you that it's the beginning of a new era for new age internet companies as well as investors alike in India. This is going to change the composition of Sensex and Nifty in the coming days. The way we saw the listing of Zomato and the market cap propelling to almost close to 1 lakh crore, and the kind of returns it has delivered, stellar returns it has delivered on the first day itself. And we hope that this thing continues. Of course, time will only tell how the company is able to sustain the prices after they keep narrowing down their losses, because it's a very new phenomena which has happened in the country where a loss making company has got such a valuation. Because in stock markets typically we used to chase ideas, or we used to only touch those ideas or those companies which were having profits, and not only profits but good profits. So this was a different deviation. And why people have given Zomato this kind of a thumbs up is looking at the market opportunity, the kind of market opportunity it opens up. It's a very new kind of a business model, and time will only tell that how the overall execution of the strategy happens, and they're able to maintain this kind of valuations in the markets. But yes, it's a great start for this new segment, which right now it's a big puzzle for all the stock market gurus in terms of how to value these companies. So in today's session we will not be talking much on the valuation side, but the kind of wealth creation opportunities available and how the markets will shape up, and how this can help you in growing your businesses when you join PL's platform as our progress partners. So I think we may be having some clients as well in this session. So I will try to mix my discussion in a way which is beneficial to partners as well as clients,
I'll try to keep a mix of Hindi and English so that maybe people from north and western parts also could connect. And of course, I am mindful that there are a lot of people from south as well who may find slight challenges in Hindi. So I will keep a combination of both wherever applicable. मैं दोनों में कोशिश करके cover करने की try करूंगा मेरा session. So this is the first slide actually I wanted to show you, where we have tried to jot down some IPO performances, some top performances of couple of companies. Now there are many companies which we cannot include each and every one of them, but just go through this slide for a minute or two. I will just keep it open and then I will get into the discussion part. It includes the name of the company, the listing date, the offer price or the issue price, the open and close of the listing day, the percentage gain, the current market prices in BSE, and wherever applicable it's NSE, like some companies are only listed in NSE or BSE single exchange. And then what is the percentage and the gain or loss, which is after listing also, whether the company has been able to sustain. So if you look at the columns now, of course, Zomato is a very fresh listing and it listed at almost close to, the listing gain was stupendous. It's opened up at 115 and closed at 125, 126, close to 126, and gain was close to 65%. But if you look at all the other names in the list, not only they have given very good listing gain on day one, but many of them have maintained the prices or maybe have grown from their listing prices also after a couple of weeks or after a couple of months of listing. And of course, there are many good ideas, but we have just been able to cover a couple of them. So you will just see, few names here. And we have included a Macrotech developer here because on the listing day, they were negative. They had given negative returns of minus 4.7%. But slowly going forward, now, from listing day, they are close to 74% plus. So if you look at the chart, GR Infra, Clean Science, Krishna Institute of Medical Sciences, of course, Krishna is only listed in NSE. Not only they have maintained the listing gain, but they have also continued gaining after the listing has happened. And why I have kept the two prices, open and close, it's very important to understand the psychology of our investors. Many Indian investors invest into IPOs only for the sake of listing gains. 9:15 बजे मार्केट खुलेगा, लिस्टिंग होगा एंड सीधा बेच देंगे, जो भी प्रॉफिट आया वो देखा जाएगा, काइंड ऑफ मॉडल. That's the psychology of many people. So I have kept the opening prices as well, so that you can understand that what was the opening, how a person would have got an exit or investor would have got an exit, and what was the close. And then the current prices. So for long-term investors, of course, who want to stay on with the idea and continue holding the stock, what kind of gains they would be getting in. So, there are some great names missing, like for example, DMart. I mean, we could not involve each and every name, but there are many stocks which have given phenomenal returns even after listing, because they're run by some of the top entrepreneurs of the country, and some of these stocks have become part of the mainstream Sensex or Nifty, or will become in the coming years based on the kind of performance they are giving in the market. IRCTC was another example which got listed last year. Sorry, the date is wrong. It's 2020. It's 2020. It's not the. This is 2019. Sorry, the date in IRCTC is wrong. And the Happiest Minds and Route Mobile are also 2020 IPOs, not 21 IPOs. Last year IPOs. So this is the kind of the gains which we have got, and these wealth creation ideas, we expect them to continue giving this kind of returns going forward. Now we generally keep sharing you the details. We keep sharing in WhatsApp and email and social media forums to all our clients what are the upcoming IPOs. Now this is just a gist of the other upcoming IPOs. Zomato has already arrived, and other two big boys of the market are LIC and Paytm and Policy Bazaar. And of course, couple of them are getting a very good response in the unlisted market as well.
So this is the lineup of upcoming IPOs, and this whole year actually is full of many big brands actually, or maybe very fast and popularly upcoming brands like Nykaa and MobiKwik and kind of Paytm. Paytm has been the poster boy of startup industry, one of the biggest beneficiaries of demonetization. And of course, the story around each startup is different. So before getting into my presentation, I want to make one small caveat here, that Zomato listing is definitely good and very positive, but it does not mean that every company will give this kind of same listing performance. These all startup companies operate in a very different dynamics. In सबके business models अलग हैं, इनके margins या जो भी run rate या customer acquisition rates, they are different. The profit segment, the revenue composition is very different. So Zomato की तरह ये सारे IPO शायद सेम पॉजिटिव लिस्टिंग दें ऐसा जरूरी नहीं है. So whenever these IPOs will hit the market, we will have to be cautious and we will have to be smart enough in analyzing whether this IPO will leave money on table or not. So ultimately, but yes, these are a couple of big names which are lined up for the year. And yes, some of them have a great potential of becoming a multi-bagger idea in the future. But of course, there is always a word of caution when we try to showcase this kind of ideas, because from PL, we don't guarantee that this IPOs will short come, or maybe they will come and give you listing gains. There is no guarantee as such. But yes, there is a market expectation, and there is some kind of market research and some other data points which indicate that a couple of them could become really good ideas or blockbuster multi-bagger ideas in the future. Now, the biggest benefit, actually, you all are market players, so you understand that. But still, for people who might be new to the market and who are looking towards starting the business or their IPO investment journey, IPO is a very interesting space where you get an early access on first day, first show kind of a model. So a lot of people have that habit of seeing movies on first day, first show. Oh, movie hit hoga ya flop hoga, that's another matter, but they just want an access to that show. So IPO gives you that early access of first day, first show. Ab wo first day hit hogi ya flop hogi movie, that time will only tell, or the overall casting will tell once you go to the show. But yes, for those kind of people, IPOs are best place to start with. The other important and very differentiating point for IPO is, unlike many other investment options, retail IPO can access with a small ticket size of close to 15,000 rupees. So it's something which is very affordable for every one of the retail clients, whoever is an investor in the stock markets. Earlier, minimum ticket sizes were up to 2 lakh rupees, and then slowly and steadily SEBI has really created an atmosphere where the whole IPO process has become very transparent and fully automated. Now 7 से 10 दिन के अंदर पूरा IPO का cycle finish हो जाता है. So it's completely online now, fully automated transactions. So there are a lot of positives actually being happening in the industry, and supported by, of course, SEBI and stock exchanges. And of course, many more changes will be coming in place slowly and steadily. Regulatory things will keep evolving. But already, Indian IPO cycle from a stock market and the regulatory perspective, it's one of the best in the world when you look at such a huge country finishing one IPO offering within 7 to 10 days, end to end, raising money and giving crediting shares in the demat account of shareholders and finishing the entire transaction. And of course, the benefits of investing could be listing day gains, but जहाँ listing day gain हो सकता है, वहाँ loss भी हो सकता है. So of course, IPOs are not a guarantee that every IPO will give you listing day gain. But yes, majority of more than 60-70% of the IPOs in last 2.5 years have given listing day gain, and they have maintained that lead or that gain in times to come. And of course, there are a couple of failures also, like Kalyan Jewelers or Suryodaya Small Finance Bank, and they're still in red. So kahin na kahin, it's a combination where currently
the favorable market conditions are supporting maybe a better listing in. And of course, there is a wealth creation opportunity for long-term investors, people who want to hold on to the stock for long-term and don't want to sell it on listing day. They, of course, they come out to be bigger gainers. For example, the shareholders of Maruti or Happiest Mind or Root Mobile or Affle and IRCTC and so on and so forth. There are many, many examples in the market like that. Now, coming to how PL can help you in understanding a couple of these ideas is that Prabhudas Leather's research divisions, they keep issuing IPO related notes. Now we cannot cover each and every IPO because there's a huge quantity of IPO which hit the market in the short span of time. But wherever we feel it's an important idea and we need to cover, we cover that. And हमने Zomato के ऊपर ये 12th July का हमारा note है, 2 days before the IPO, that we came out with a subscribe rating with a full explanation. ये कुछ 10-12 पेज का detailed report था. And I have just, kept 2 pages here for you to visualize this, how that report comes and how this report can be sent by you to your end clients so that they can take an informed decision. So we were very aggressive on Zomato and we had given a very, very favorable outlook supported by this research note. And it was a very in-depth study on this note. Of course, जब भी कोई unlisted stock रहता है तो उसका research versus a listed stock, it's slightly different because the availability of numbers, data points might be restricted at some point of time. But yes, whatever information was available and filed in their red herring prospectus was used. And this was the outlook for Zomato. And इस तरह से हम बहुत सारे दूसरे IPO notes भी देते रहते हैं, बीच में काफी सारे notes आते रहते हैं research में. Now, आपको ये inform करने के लिए कि ये IPO आ रहा है, we keep sending this kind of WhatsApp messages, video messages, plus ये email वगैरह में भी आपको सब आएगा future में, so that you don't miss out on these IPOs and you can keep sending these kind of things to your end clients as well. The whole idea is that the clients are ready with the money कि भाई ये IPO आने वाला है, इस तारीख से इस तारीख तक अगर ये रहने वाला है तो at least they are ready with the money, they are ready with the UPI mandates and so many things because UPI has become compulsory now. And plus we keep sending you WhatsApp messages first day, last day वगैरह वगैरह. ये आपको काफी सारे ऐसे WhatsApp messages भी आएंगे जिसमें we will give you the links कि कहाँ से subscribe करना है, उसका 3-4 लाइन का small write up होगा why this looks good or bad. And plus if you look at this WhatsApp message, we have included the research link also where you can click and read the report, the research report on that IPO. अगर उस IPO में research report है तो इस तरह से link के messages. Now you can forward these messages to your end clients or your prospects in your region, and आप अपना भी यहाँ पे आप नाम नंबर नीचे दे सकते हैं so that your clients can contact you in your region for any kind of assistance they want to subscribe for the IPOs. Now आपके clients को और आपके IPO का subscription easy हो उसके लिए we have e-IPO portal. Now this e-IPO portal is online bidding facility for IPO. So existing PL client can also bid and a guest can also bid. So existing PL client जो है वो अपने existing trading account जो उनका खुलता है उसके ऊपर में we give them PL client credentials. Every client gets an email wherein PL clients का login ID दिया जाता है clients को. So all the end clients can use their PL clients login ID and password to access this portal. उसमें अलग से registration करने की आपको जरूरत नहीं है. And if suppose you are not a PL client, I mean any of your clients are not a PL client, they can also sign up as a guest user. So it's a great facility. If you log in into this portal, within 3-4 clicks you will be able to bid for an IPO after doing the UPI connectivity because you have to use UPI mechanism here. And ये एक e-IPO portal है. इसके अलावा to support our sub brokers to scale up the business, हम इस तरह का एक SMS भी आपके क्लाइंट्स को भेजते हैं जिसमें हम उनको एक सिंपल लिंक भेज देते हैं SMS में. We send a very simple link in the SMS. ये लास्ट डे ज्यादा जाता है IPO में. We have just started this, so थोड़ा इस पे टेस्टिंग भी चल रहा है, बट यस इट्स अ वेरी गुड फैसिलिटी जहाँ पे क्लाइंट ये लिंक को क्लिक करते ही 15 सेकेंड के अंदर वो अप्लाई कर सकता है IPO में. दे कैन अप्लाई. So the moment a client clicks on this kind of a link, a pre-populated screen comes out with the client's name, client's PAN number pre-filled.
अगर और आपने अगर यूपीआई आईडी ऑलरेडी आपका यहाँ पे अटैच करके रखा है तो डेफिनेटली यूपीआई आईडी आल्सो विल बी कैप्चर्ड हियर ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू री एंटर इट। बट एक बार पहली बार जब आप ये प्लेटफॉर्म पे आएंगे, फर्स्ट टाइमर्स, when you will be first time visiting this platform, you will have to, we will pull your PAN numbers and all from the KYC repository, but you will have to attach a UPI mandate here. UPI आपको एक बार एक प्रोसेस करना पड़ेगा. Once you do it, it will be permanently fixed to your ID, so that next time आपको IPO में वो UPI ID fill करने की जरूरत नहीं है, because now UPI has become compulsory. So ये जो email and SMS आपके clients को जाएगा, the email and SMS which will go to your clients will make the client's life very easy, because they don't have to log in and do all these things. Straight away, the moment they click on the link, this pre-populated form will come. They just have to accept the terms and conditions and submit the button. तो जो भी minimum lot size है, minimum lot size will automatically be bidded by the clients. वो अपने आप bid हो जाएगा. So this facility will improve your application numbers at end client level. Because a lot of clients, they basically like they become complacent कि यार आज bidding करते हैं, कल bidding कर लेंगे, last day bidding कर लेंगे, they keep avoiding it. थोड़ा laziness रहता है, कि let us look at the market, how they close on the third day, फिर हम apply करेंगे shares में. So whatever your client plans, this simple IPO emailer and SMS which is being sent by head office will help you to reach to your clients faster with pre-populated fields. ये एक बहुत ही अच्छी सर्विस है जो हम PL में दे रहे हैं हमारे सारे क्लाइंट्स को, सब ब्रोकर्स को, हमारे ब्रांचेस को. So it's a great platform. eIPO का बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है. एक ही मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे, that UPI mandate is important, and UPI में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इंडस्ट्री लेवल पे, बिकॉज जोमेटो के टाइम पे भी within first hour itself more than 11 lakh applications had arrived, and the banking system was not ready for that. तो बैंकिंग के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बिकॉज वी आर सीइंग लॉट ऑफ स्मॉल बैंक्स आर बेसिकली नॉट एबल टू गिव यूपीआई रजिस्ट्रेशंस वेरी क्विकली. दी मैंडेट वगैरह आने में बहुत टाइम लग रहा है. तो हमारे भी बहुत से एप्लीकेशन हमने देखे फेल हो रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस. एक तो पहले आपको यूपीआई आईडी जनरेट करके यहाँ अटैच करना है, एंड देन मैंडेट जनरेट होगी, वो मैंडेट भी आपको एक्सेप्ट करनी है. So we can run a small training program also for our upcoming or new progress partners, or for your staff, to train you कि भाई eIPO portal में आपके client को आप किस तरह से guide कर सकते हैं in getting this UPI thing enrolled in the eIPO portal. तो UPI का एक एरिया है जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. We are all trying to see how we can educate more clients to work on this UPI thing, so that IPO के लास्ट डे प्रेशर ना आ जाए और आप अपना एप्लीकेशन मिस ना करना. सो यस, यूपीआई हैज बिकम मैंडेटरी. उसके अलावा IPO में अप्लाई करने के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाती है. देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड ऑल दैट स्टफ व्हिच नीड्स टू बी डन, एंड सेबी हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ब्रोकिंग कंपनीज. इसलिए हमें ब्रोकिंग कंपनीज को यूपीआई का ये रूल फॉलो करना पड़ता है. बहुत से डायरेक्ट बैंक्स जो हैं, दे स्टिल आर वर्किंग ऑन दैट ASBA मोड एंड ऑल, बट दैट्स ओनली अलाउड टू बैंक्स नाउ. ब्रोकर्स के केस में भी हमें यूपीआई फॉलो करना ही पड़ता है. सो मैं अगेन हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़ा यूपीआई वाला एरिया सेंसिटिव है, यहाँ पे हमें आपका कॉपरेशन चाहिएगा, और मे बी आपको हमारी कोई भी हेल्प चाहिए तो वी कैन ऑलवेज ट्रेन यू ऑन अ जूम कॉल. आपको और आपके स्टाफ को, आपके क्लाइंट्स को हम गाइड कर सकते हैं. बट क्या है, IPO इज अ टाइम सेंसिटिव थिंग, एंड वो 2 या 3 दिन जब IPO रहता है तब एक साथ इतने हजारों कॉल आते हैं, तो पर्सनल अटेंशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है IPO के दिन में. सो आई विल बी वेरी वेरी अपफ्रंट इन टेलिंग यू कि जब IPO का लास्ट डे होगा, उस टाइम देयर कुड बी पॉसिबिलिटी दैट आवर फोन नंबर्स आर ऑल बिजी एंड वी आर नॉट रीचेबल, बिकॉज एक साथ 10-12 हजार लोग रीच करने की कोशिश करते हैं, एंड एवरीथिंग गेट्स जैम्ड ऑन दैट डे. सो बेटर है आप ये IPO से 3-4 दिन पहले ही जाके अपना eIPO पोर्टल में सब सेट कर लें, अपना डिटेल्स वगैरह देख लें, एंड फिक्स योर UPI एंड एवरीथिंग एल्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, IPO के बारे में तो मैंने बहुत बातें कर ली, बट IPO के साथ ही एक नया सेगमेंट जो काफी अच्छे से डेवलप हो रहा है इंडिया में, दैट इज अनलिस्टेड शेयर्स. एंड बिफोर आई जंप इनटू अनलिस्टेड शेयर्स, आई will be very clear in mentioning that investing in unlisted share is a high risk, high return strategy, not for each and every client. It's only suitable to those clients जिनमें वो risk taking capacity है, because IPO आएगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है. From PL as a broker is not giving you any kind of assurance or a guarantee that ये IPO आएगा या listing in होगा वगैरह वगैरह. But yes,
अनलिस्टेड शेयर इज शेपिंग अप एज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस, जहाँ पे एक और ये सर्विस है जो आप अपने क्लाइंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये आईपीओ के भी बहुत पहले का स्टेज है, जहाँ पे आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट्स ऑलवेज अ बिग क्वेश्चन। बट अनलिस्टेड शेयर्स अगर आपने कोई अच्छी फ्यूचर मेगा कैप स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई कर ली है और आपने वो अनलिस्टेड शेयर्स लेके रखे हैं, तो मे बी 2 साल 3 साल 4 साल जब भी उसका आईपीओ आएगा, यू कैन रियली क्रिएट अ ग्रेट वेल्थ। बट यस, it is a high risk high return strategy, but we are seeing lot of client preferring to this strategy कि वो अपने कैपिटल अपने पोर्टफोलियो का 4-5% अलोकेशन अनलिस्टेड शेयर्स को भी दे रहे हैं। सो ये हम इस तरीके से काफी कम्युनिकेशन भेजते हैं अनलिस्टेड शेयर्स का। इफ यू लुक एट दिस चार्ट, दिस प्राइसेस, दिस क्रिएटिव हैज बीन पिक्ड अप बाय मी, जो पुराना क्रिएटिव है, ये हमारा अक्टूबर नवंबर में लास्ट ईयर हमने ये क्रिएटिव दिया था, जिसकी अगर आप रेट्स देखेंगे तो चेन्नई सुपर किंग वाज क्लोज टू 53-55 रुपीज के आसपास का रेट चल रहा था, आज अराउंड 95 की रेंज में है। नजारा तो 840 के आसपास चल रहा था, जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, आई हैव ऑलरेडी शोड यू दैट एग्जांपल इन द प्रीवियस स्लाइड कि नजारा कहां से कहां पहुंच चुका है। फिनोपेटेक 115-20 चल रहा था अक्टूबर नवंबर में, जो आज की डेट में अराउंड 280-85-90 की रेंज में है। रिलायंस रिटेल वाज क्लोज टू 1395-1400 रुपीज, आज रिलायंस रिटेल 2100-2150 के रेंज में चल रहा है। सिमिलरली एचडीबी फाइनेंशियल अराउंड 950 की रेंज में है। टाटा टेक्नोलॉजीज 2700 में हमने कल डील की है, 2730 या 40 रुपए के आसपास, एक बड़े क्लाइंट के लिए 3500-4000 शेयर्स की उनको क्वांटिटी चाहिए थी, तो ये 6 महीने पहले 1000 रुपए के रेट के आसपास चल रहा था टाटा टेक्नोलॉजीज। सो ऑफकोर्स मैं आपको पॉजिटिव स्टोरी सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एवरी स्टॉक इज पॉजिटिव, कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक्स में प्रॉब्लम भी है, जैसे सूर्योदय बैंक वगैरह वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स बाय शोइंग दिस वी आर नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि ये होने ही वाला है, ये प्राइस बढ़ने ही वाला है, दिस इज वी आर ट्राइंग टू एजुकेट यू बाय शोइंग कि भाई ये पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ था। वी आर नॉट ट्राइंग टू रेकमेंड यू, वी जस्ट ट्राइंग टू शोकेस कि ये अपॉर्चुनिटी है क्लाइंट्स को, ये लास्ट ईयर के प्राइजेस हैं एंड दिस ईयर द because of favorable market conditions and the euphoria which market is enjoying, the prices have increased on the unlisted shares side. Now to support our clients, we keep coming out with this kind of small reports on unlisted shares also, जैसे हमने नजारा टेक्नोलॉजी पे भी एक छोटा सा कवरेज किया था। These are basically informative reports, they are not research reports for recommendations, they are just informative reports कि ये कंपनी क्या करती है, इसके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कौन कौन है वगैरह वगैरह। तो आप देखेंगे तो नजारा के इस नोट में हमने ये बेसिक इंफॉर्मेशन कवर की थी, सो दैट अवर क्लाइंट्स कैन अंडरस्टैंड व्हाइल लुकिंग एट इट। और हम इस तरीके से उनके कुछ बिजनेस की वर्टिकल्स का ब्रेकअप करके रेवेन्यू एंड द अदर डेटा व्हिच वी फेल्ट वाज इंपॉर्टेंट वाज आल्सो गिवन इन दिस रिपोर्ट, एंड दिस इज ऑल पब्लिश्ड डेटा जो मीडिया में ऑलरेडी कहीं ना कहीं पब्लिश किया हुआ है। बट दिस काइंड ऑफ स्मॉल समरी और स्मॉल रिपोर्ट्स, they basically help our clients to take some informed decisions कि भाई रेवेन्यू क्या है। एंड हियर वी कैन नॉट कवर ईच एंड एवरी स्टॉक, पर हम सिलेक्टिवली हमको कहीं लगता है तो हम इस तरह से कुछ अनलिस्टेड स्टॉक्स में भी इस तरीके से रिपोर्ट्स वगैरह निकालते रहते हैं। इस तरीके से रिलायंस रिटेल की भी एक रिपोर्ट हमने निकाली थी एंड इस तरह से काफी दूसरी भी रिपोर्ट्स है। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, these are not recommendations but these are just information covering data points। इस रिपोर्ट से एटलीस्ट यू गेट सम आइडिया कि कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, एंड मे बी यू कैन सर्कुलेट टू क्लाइंट्स एज वेल। जब जब ये रिपोर्ट रिलीज होगी इस तरह से आपको भेजी जाएगी, तो दिस थिंग्स कैन हेल्प यू टू बेसिकली सर्विस योर क्लाइंट्स। ये रिलायंस का पूरा रिपोर्ट है। नाउ इट्स अ ह्यूज रिपोर्ट, सो मैं सारे पूरे रिपोर्ट को तो नहीं दिखाऊंगा आपको, आई विल जस्ट शो यू सम ग्लिम्स, आई एम शोइंग यू ग्लिम्स सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। इस तरह से फिनोपेटेक के ऊपर भी एक छोटा कवरेज हमने किया था कि उसके शेयर होल्डर्स कौन है, कंपनी क्या कर रही है वगैरह। It's just one page I have shown here. I am not covering the entire report here. Now, the most important points when you deal with the IPO, this unlisted shares is that, again, I will repeat, investing in unlisted shares is risky and suitable to clients with high risk appetite. Final IPO and listing price depends on many things beyond anyone's control. PL does not guarantee any listing into any investors. PL's company notes, research notes, one pagers are for information purpose only. The numbers and assumptions in it can change on market and economic situations. Investors should take suitable care to do their own due diligence before investing into unlisted shares। आप बाद में आके मुझे गाली दोगे कि सर आपने बहुत बड़ा आइडिया दिया और हमें इन्फ्लुएंस किया। So I want to use this caveat saying that we are trying to showcase you the market opportunity and trying to be honest
ये अब आपके ऊपर है और आपके क्लाइंट्स के ऊपर है कि हाउ यू वांट टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। जो मार्केट रिलेटेड रिस्क है वो एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट, एंड वी ऑल नो दैट इक्विटी इज अ हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी, और उसमें भी अनलिस्टेड शेयर बिकम्स मोर रिस्की है। बट यस, इट्स एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज पीपल आर मिंटिंग मनी हियर, एंड इफ दे आर गेटिंग द थिंग्स राइट। व्हाट विल बी द डील प्रोसेस? डील प्रोसेस के अंदर में सबसे पहले स्टेप 1 में आप अपने जब आरएम्स के साथ क्वांटिटी एंड प्राइस फिक्स करेंगे कि सपोज आपको रिलायंस रिटेल के 500 शेयर या 1000 शेयर लेने हैं, या जो भी आपका प्राइस और क्वांटिटी एक बार क्लाइंट के साथ फिक्स हो जाएगा, यू विल हैव टू सेंड अ ईमेल, द कंफर्मेशन ईमेल टूplipodesk@plindia.com। जब ये एग्री हो जाएंगे, हम ये सारे टर्म्स हमारे एग्री हो जाएंगे, वी विल रिसीव द ऑर्डर कॉन्फर्मेशन। ऑर्डर कॉन्फर्मेशन आपके पास मिलते ही आपको एक डील कंफर्मेशन लेटर दिया जाएगा, जो हमारा आईपीओ डेस्क के आईडी और एक नीलेश शिंदे करके हमारे कलीग हैं, जो जिनका मैं आपको डिटेल्स आगे दूंगा। ही विल सेंड योर डील कॉन्फर्मेशन लेटर। क्लाइंट हैज टू ओके दिस डील कॉन्फर्मेशन लेटर। क्लाइंट को ये कॉन्फर्मेशन हमें देना पड़ेगा कि आई एम रेडी टू बाय दिस मेनी क्वांटिटी एट दिस प्राइस, विद फुल अवेयरनेस कि भाई मैं रिस्क ले रहा हूँ। जैसे ही क्लाइंट पूरा कॉन्फर्मेशन देगा, उसमें सारी डिटेल्स भी रहेगी। क्लाइंट को अपना क्लाइंट मास्टर सीएमएल कॉपी, कैंसल चेक कॉपी, पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ बेसिक डिटेल्स हम मांगेंगे तो देना पड़ेगा। सर्टन थिंग्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम द केवाईसी, वो हम पिक कर लेंगे, बट सर्टन थिंग्स नीड्स टू बी गिवन बाय द क्लाइंट टू अस, एंड देन वी हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम द क्लाइंट इन पीएल बैंक अकाउंट। जैसे ही आप ये डील कंफर्म करेंगे, आपको हम बैंक अकाउंट का डिटेल भेज देंगे कि आपको पैसा कहाँ ट्रांसफर करना है। द मोमेंट यू ट्रांसफर द मनी इन द बैंक, आपको अगले 2 से 3 दिन के अंदर, मोटा मोटा तो हम टारगेट करते हैं 24 आवर्स में वी ट्रांसफर शेयर टू द क्लाइंट्स अकाउंट, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड बिकॉज ऑफ पब्लिक हॉलीडेज और वीकेंड्स, आप जैसे ही आपका पैसा, क्लाइंट का पैसा ट्रांसफर होगा, विद इन 2 to 3 days shares will be transferred to client's demat account. This is the process which you have to follow when you look at unlisted shares. एंड ये डील कॉन्फर्मेशन का सैंपल है जो क्लाइंट से हम फिलअप करवाएंगे। इस तरीके से क्लाइंट को जाएगा, एंड यू विल बी गाइडेड। जब कभी भी आप इस तरीके की कोई डील में इन्वॉल्व होंगे, हमारी टीम जो है आपको पूरा गाइड करेगी। आवर टीम विल गाइड यू फ्रॉम ए टू जेड, आपको पूरा हैंड होल्डिंग मिलेगा इसमें। So this is the confirmation letter which the client needs to give, and जो banking transaction के बाद शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। So buying की प्रोसेस भी है और similarly selling की प्रोसेस भी है। Now one important thing is ledger credit is not allowed here because we have to pay money upfront to the sellers. So हमें पैसा वहाँ immediately चाहिएगा अकाउंट में। आप बोलेंगे लेजर में से क्लाइंट के उठा लो, that is just not possible. So I will again repeat that ledger credit is not allowed। बहुत लाल कलर के वार्निंग सिग्नल में पहले ही दे दिया है, ताकि आप ये ना बोलें कि यार हमें बताया नहीं क्या प्रोसेस है। आप एंड टाइम पे डील के मुझे बोलेंगे लेजर से पैसा ले लो, आई विल नॉट बी एबल टू टेक, एंड इट विल क्रिएट अ डिसअपॉइंटमेंट। तो आप पहले ही ध्यान में रख लीजिए कि क्लाइंट को पैसा ट्रांसफर करना जरूरी है। मैं लेजर से पैसा नहीं ले पाऊंगा क्लाइंट का। आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बट ये एंड टाइम पे आप डिसअपॉइंट ना हो, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि फंड्स हैव टू कम डायरेक्टली फ्रॉम द क्लाइंट्स अकाउंट। वी विल नॉट अकोमोडेट लेजर क्रेडिट्स। और जो डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट है वहां पैसा आना चाहिए, नॉट टू योर रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट एंड ऑल दैट स्टफ। ये क्लेरिकल मिस्टेक्स हो गई तो आई विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट यू, बिकॉज अनलिस्टेड शेयर्स की मार्केट बहुत ही प्राइवेट मार्केट है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज नॉट कांस्टेंट। सो द प्राइस ऑल्सो चेंजेस एवरी डे। सो आज अगर कोई 100 रुपीज में डील आपने क्लिक की है, हमसे फाइनल की है, और आपसे पैसा देने में डिले हो गया, तो आई कैन नॉट अश्योर के सेकेंड डे आपको वही रेट मिलेगा। बिकॉज अगर वो स्टॉक बिक गया, अगर वो इन्वेंट्री खत्म हो गई, इफ दैट इन्वेंट्री फिनिशेस, देन द प्राइसेस विल चेंज। वो ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। सो इट्स अ स्लाइटली जैसे ही अगर क्लाइंट कंफर्म करता है, फटाफट आप बैंक का ट्रांसफर प्रोसेस कर लीजिए, सो दैट वी कैन लॉक द प्राइस एंड द क्वांटिटी। एंड जनरली मार्केट में अवेलेबिलिटी शेयर्स की इतनी रहती नहीं है, सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कीप इन टच थ्रू अ फोन, सेइंग कि सर इतना शेयर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज समटाइम्स आप कोई बड़ा क्वांटिटी मांग लेंगे, 25,000 50,000 शेयर चाहिए, तो मार्केट से इतना शेयर नहीं मिल पाता है, बिकॉज अनलिस्टेड शेयर्स में देयर इज नो मार्केट एज सच। वी हैव टू कॉल अप 10-15 डिफरेंट पीपल टू अंडरस्टैंड कि हमें ये शेयर्स कहाँ से मिलेंगे। So it's a very laborious work actually which happens to manage this kind of transactions. And for this you have to contact our PL IPO desk at PLindia.com। ईमेल आईडी दिया है मैंने यहाँ पे नीचे, मिस्टर नीलेश शिंदे का कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है।
this is the process which we have to follow. So with this, typically, you know, I am almost through with my presentation, and I can see there are a couple of questions which have come. So I'll just look at the questions, and then we can open the forum for Q&A. So yes, Nitin ji, the listing date was wrong. वो 2020 का listing date था. There was a typo error जो 21 हो गया था. Nitin ji had pointed out in the chat box. So maybe guys, I can see one question. हाँ, श्रीकांत जी ने भी point out किया 2020. So great that you pointed this out. At least no, you're attending and you're focused. So yes, there was a typo error. And we are open to questions if you have any. I mean, you can type your question in the chat box or the Q&A section, and I will be happy to answer them. But one thing I wanted to make sure is that IPO is a very time sensitive thing. So don't wake up at the last moment. No, try to prepare. If you like an idea, like an IPO, कि भाई मुझे subscribe करना है, so don't wait till the last hour. Try to do it in the first day itself, ताकि ये UPI की मारामारी वगैरह पहले ही सब solve हो जाए, because UPI has become a pain point right now. You know, it's a huge problem, and we are requesting SEBI to give us a level playing field with the bank, because bank में client का आसपास easily हो जाता है, but यहाँ UPI हो रहा है. But anyways, you know, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. Regulators are trying to make things more transparent and positive and maybe faster. So थोड़ा pain point है. And Nitin ji is asking a question: any minimum quantity or amount in unlisted space? So great question, नितिन जी. अनलिस्टेड स्पेस में हम ऑलवेज चाहते हैं कि बड़ी क्वांटिटी में डील हो या बड़ी वैल्यू हो, एटलीस्ट 5 लाख 10 लाख की. बट ऑनेस्टली फॉर आवर एस्टीम्ड प्रोग्रेस पार्टनर्स, आप 2-3 लाख रुपए की भी कोई आपके पास डील आएगी तो वी विल ट्राई टू अकोमोडेट यू. एज सच, यू नो, वी विल नॉट से कि ये मिनिमम क्वांटिटी रूल आपके लिए एप्लीकेबल है. सो फॉर ऑल आवर प्रोग्रेस पार्टनर्स, वी विल ट्राई टू अकोमोडेट smaller quantities as well, because a lot of times in the market huge quantity of shares are not available. So it's a mix and match approach, but we request everyone to at least keep, you know, 2-3 lakh rupee of worth of transaction value in the whole space. Mr. Koteshwar Rao wants to see the mail again. Mail, Koteshwar Rao ji, mail or presentation? And which part of presentation you want to see? So this is the one which you wanted to see, or this one? I mean, which one you wanted to see? So Mr. Balaji is asking a great question: is it safe for investing into unlisted share? So thank you, Mr. Balaji, again for asking these questions. Unlisted shares is a high risk, high return strategy, only suitable to those clients who basically understand कि unlisted shares में listing की कोई guarantee नहीं है. Plus listing होएगी तो prices ऊपर listing gain मिलेगा या loss मिलेगा, that is also not guaranteed. So it's a high risk, a high return strategy. So only suitable to those clients who are aware that they are taking this kind of risk with full understanding when they're investing into unlisted space. But yes, one thing which we have seen, that with the kind of euphoria which is going on the IPO markets, unlisted shares, especially good brands, big brands like Tata, HDFC, Reliance, and all these kind of people, they will be able to launch their IPOs in couple of years. But yes, IPO depends on a lot of regulatory approvals, SEBI approvals and all. So we cannot commit on timelines. But yes, I mean, for people who want to take risk, this is an area जहाँ पे आप अपने client को बोल सकते हैं that at least they can look at allocating 4-5% of their portfolio with the clear vision that this is risky. राकेश मिश्रा जी ने क्वेश्चन पूछा है, अनलिस्टेड शेयर्स कैन वी सेल ऑफ मार्केट? यस राकेश मिश्रा जी, आप अनलिस्टेड शेयर्स को ऑफ मार्केट भी बेच सकते हैं. यू कैन सेल अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ मार्केट, बट दिस यू कैन ओनली डू बिफोर द IPO dates are announced, because the moment IPO dates are announced, the shares go for lock-in. और IPO के पहले फिर वो जैसे ही लॉक होता है, 1 साल के लिए आपका लॉक हो जाता है शेयर्स. So
before this IPO announcement happens, you can definitely sell your shares in the private markets, whichever that unlisted shares you or your clients are holding. But एक बार IPO announce हो गया और आपका डिपॉजिटरीज एक बार आपके अकाउंट में वो स्क्रिप्ट को फ्रीज कर देंगे, then you cannot sell. Then it goes for 1 year compulsory lock-in. And I also want to touch upon one important point about taxation in unlisted shares. Unlike normal equity shares, जहाँ secondary market में हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 साल में लगता है, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है, अनलिस्टेड में 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म होगा. सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स विल टेक 2 years in unlisted shares, in case of unlisted shares. So clients को ये बताना भी जरूरी है. Please inform all your clients this taxation rule as well. Unlisted shares enjoy long term capital gain benefit only after 2 years, unlike normal equity shares जिनको 1 साल में होता है. So technically, people who are looking to invest into unlisted shares, they should have at least 2 to 3 year of minimum time horizon, so that the ideas really mature and possibly they become IPO ready companies and they come out with IPOs. Secondly, you also do away with this 2 years of holding, so that at least you enter into that long term capital gain trajectory if you are making any gains. So lock-in में थोड़ा careful रहना जरूरी है. The moment IPO dates are announced, then the depository locks the scrip in your demat account. You cannot transfer them. तो IPO announcement के पहले अगर आप transfer कर देते हैं तो फिर भी आपका off market allowed हो जाता है. And yes, now a lot of people are asking for Paytm shares क्योंकि Paytm का IPO announce हो गया है. Many inquiries are coming to us. I wanted to give you one small word of caution in Paytm, because हमने शेयर होल्डर एग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेस देखे जिसमें लिखा हुआ है कि एनी अनलिस्टेड शेयर रिक्वायर्स कंपनीज अप्रूवल. तो पेटीएम ने ऐसा खास लिखा हुआ है, विदाउट विच द ट्रांसफर विल बी कंसीडर्ड इलीगल और वॉइड. तो पास्ट में कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं पेटीएम में जिसमें शेयर ट्रांसफर तो हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है, बट वी एज अ हाउस, वी एज प्रभुदास लीलाधर, वी थॉट दैट ये सिचुएशन में हमारे क्लाइंट्स को नुकसान हो सकता है अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हुई पेटीएम के लेवल पे. तो So right now, with that unclear guidelines on the transfer portion of Paytm, we are right now not advising our clients to deal into Paytm unlisted shares. Because अगर कल को कंपनी ने बोला कि भाई आपने मेरी अप्रूवल नहीं लिया और अपने आप इंटरनली ट्रांसफर कर लिए हैं शेयर्स which is not valid or legal, then the clients may suffer. So हम थोड़ा cautious approach के साथ Paytm को देख रहे हैं. हम unlisted शेयर में बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं Paytm का. And we get a lot of inquiries and which we have to refuse to the clients. So just take a note of this thing also. बाकी आपको कहीं पे भी कुछ भी जरूरत हो, कुछ समझना है, if you want any more clarifications, our team is always there. I have basically shown you Nilesh Shinde's email ID. You can always keep in touch with Nilesh Shinde. And I'm just seeing one more question from Aishwarya Lakshmi from branch side. After making the bidding, please get the client side process details. New client saying they are not receiving any confirmations. So Aishwarya, it's a valid point. Many clients are not receiving UPI confirmations, and UPI confirmation goes from their bank actually. We as a PL, we as a company, we don't have any access to that UPI mechanism. So many clients after bidding, they don't get this confirmation because their the bank through which they are dealing may not have sent it. We have seen that there is a delay of more than 24 hours, or even in some cases, the confirmation has taken 4 times. So for the confirmation situation for UPI mandates, you have to connect, the clients will have to connect with their banks actually. We don't control that ecosystem. Rajendra ji is asking that can we have a recording? So sure sir, I hope our team member has recorded this session, and we will send you the recording or the YouTube link as and when they're able to upload that by the end of the day. So do leave your email ID or WhatsApp number to the RM or the RFM whoever is handling you, and we will facilitate you with the link of this video. So I don't see any other questions, maybe, okay. So there is a question about Patanjali shares. Now we have heard rumors in media that the shares Patanjali might look out for IPO.
we don't have any official confirmation, but yes, media reports say that something is happening, and it's possible that in these favorable market conditions, Patanjali also can look at listing, and maybe it will be interesting to really see how this thing pans out, because they had really given a great competition to big FMCG companies when they had launched their products. But right now we're not very much aware about the plans of the company. Whatever we have heard is through the media reports. So हमको अगर कोई भी न्यूज मिलेगी पतंजलि शेयर्स के ऊपर तो डेफिनेटली वी विल कम बैक टू यू. So I don't see any more questions here in the chat box and the Q&A box as well. So I hope will be off to a great start. Actually, keep in touch with our teams, and we will always be happy to help you in IPOs as well as unlisted shares. Thank you. Thanks a lot for sparing your time on a Saturday morning. Thanks a lot. Vikas, if you want to add anything, or anybody from Progress Partner channel wants to add anything here before we conclude. So Mr. Koteshwar Rao is wanting to clear the doubt on DP lock-in. So Mr. Koteshwar Rao, in case of unlisted shares, the deals happen through off-market transfers. And when you do off-market transfer from your Demat accounts, generally there is no restriction in case of any unlisted share. But the moment an IPO is announced for that unlisted share, for any unlisted share in your Demat account, after the announcement of IPO, SEBI rule prescribes the depositories. I mean, SEBI rule tells the depositories that you lock the Demat account of the holders. The transfer of the IPO bound shares, the IPOs which have already been given a go ahead by SEBI and the announcement has happened, they get into a lock-in phase for 1 year. So you cannot transfer the shares for 1 year if it is logged into your Demat account. And this generally happens around 15-20 days or 1 month before the real IPO date. So suppose Zomato's IPO came on 14th of July. So roughly around 15-20 days or around a month before that. So typically, assuming that 15th June or 20th June would be the day where the shares would have got locked in. Before that, you can transfer. Before lock-in, you can do all the transfers. But whatever 20 days or 1 month before your Demat thing gets locked in, from there you cannot transfer the shares for 1 year. So people who want to book profit, they should try to sell their shares before this IPO announcement hits the market and the Demat gets locked in. And there are enough media reports and exchange notices which come informing about the dates. So it does not happen immediately. It's an informed process. Clients come to know about this process. So anybody who does not want to lock their shares for 1 year after IPO, they can sell it before the lock-in happens in Demat. But it's an important point, and I'm thankful that you again brought it up. It's worth repeating it here. So we are just done with almost all the questions, and thank you all for again attending this session on a Saturday morning. And let's be in touch and try to see if we can help you out with a couple of deals here, wealth creation deals. Thank you. Thanks a lot.